Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, hoping all of you are fine. And today we will do another essay from Unique Notes, our very next essay, essay number 10, and the title is A Visit to a Historical Place. First of all, we will talk about some quotes which are written on this board, and then we will go in detail about this essay. So let's see what's the quotes I have to share with you. जी बेटे, आपका जो आज की जो आपकी असाइनमेंट है उसमें एक ऐसे है, और ऐसे क्या है आपका अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस. इम्पोर्टेंट ऐसे है कि एक तारीखी मकाम की सैर. आपके पास कोट्स हैं. द जर्नी इज़ अ रिवॉर्ड, इट एड्स टू लाइफ व्हाट कैनॉट बी एडिड अदरवाइज. तो जर्नी एक रिवॉर्ड है इस सूरत में कि ज़िंदगी में आपकी वो ब्यूटी अवॉर्ड करता है ये जर्नी, और आपके जो ट्रिप्स हैं, आपके जो विज़िट्स हैं, जो कोई और चीज़ आपको इन्जॉयमेंट नहीं दे सकती, वो आपको सिर्फ इन रिक्रिएशनल प्लेसेस ही वो इन्जॉयमेंट दे सकते हैं. Number 2, historical places are character of history based on or concerned with the event of history. So when we talk about the historical places, we see that all the historical places provide us certain information and the knowledge regarding some past events or incidents, past events. तो हमें past जो events हैं, वाक़यात हैं, उनके बारे में इन historical places पर जाकर पता चलता है. Number 3, travel and change of place impart vigor and zest to life. कि जब हम travel करते हैं, जब हम visit करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें we find a new zest, new passion, New Zealand zest for life. We feel ourselves more vigorous and energetic. Number 4, the best part of the beauty of places is that which no picture can describe. तो जो खूबसूरती होती है मुख्तलिफ मकामात की, उसका बेस्ट पार्ट क्या है? विच स्टेज, विच गेट्स इम्प्रिंटेड इन योर माइंड फॉर एवर एंड एवर, विच नो पिक्चर कैन एक्चुअली डिस्क्राइब. तो पिक्चर्स के ज़रिए से हम खूबसूरती को शायद बाज़ दफ़ा थिंग्स बिकम अनएक्सप्रेसिबल, अनस्पीकेबल. ठीक है, वो ब्यूटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं. जी, हिस्ट्री इज़ अ साइक्लिक पोएम. साइक्लिक, repeated regularly, cycling poem written by time upon the memories of man. तो क्या है हिस्ट्री? कि हिस्ट्री जो है एक रिपीटेड इवेंट्स, ऐसे रिपीटेड इवेंट्स हैं जो कि ज़ाहिर मुख्तलिफ अदवार में तारीख़ जो है लिखी जाती है. एंड these again gets these all events or these all stories of past gets imprinted in the memory of a man. तो ये हमारे जहन में हमेशा के लिए रह जाती हैं. तो coming towards our essay, a visit to an historical places, I would like to say that beta, a visit to a historical places basically provides us a unique experience and opportunity. It fills our heart with awe and admirations. It gives us a peep into our past, the glorious past. And when we talk about different historical places, we cannot ignore Lahore. Like Delhi, we see that Lahore has also been the seat of Mughal rulers, and we see that Lahore is full of park, Lahore is full of fountains, and we see greenery everywhere in Lahore, and Lahore is rightly called a place of gardens. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बेटा? We find here the running fountains, greenery, and the great attractions of Lahore. We see the great attractions of Lahore include Shalimar Garden, Lahore Fort, Museum, and Shahi Mosque. Minar Pakistan is also having historical importance or significance. But on the top, when we talk about the gardens, on the top of the list is Shalimar Garden. And today's essay is all about our visit to Shalimar Garden. तो आज का जो essay है ये Shalimar Garden visit के हवाले से होगा. देखते हैं अ विजिट टू एन हिस्टोरिकल प्लेस. हिस्टोरिकल आपने बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल इन वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इन इंट्रो यू विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस
एक्चुअली कि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं उसकी अहमियत क्या है. हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स रिप्रेजेंट द कल्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ अ गुड ओल्ड टाइम्स व्हेन किंग्स एंड रूलर्स पेड full attention to the promotion of art. So we see that the historical places definitely revive the period, the past era at the time when the kings or the queens or the emperors ruled in the past. ठीक है, and we see that how did they make good efforts to promote art and architect. And these historical places also reflect, or these also show us the culture and the civilization in olden times, and the architecture and the masterpieces of the architectures. These buildings introduce us to the profound skill of the architects as well as the imaginative faculties of its builders. Faculties mean abilities. तो क्या है कि we come to know after watching, after observing, after visiting these beautiful monuments, these beautiful worth-seeing places, that these reflect the imaginative faculties or skills of the builders or the maker of this structure. कि उन जो माहिरीन की एक्सपर्टीज़, उनकी स्किल, उनकी जो इमेजिनेशन है, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर में. In fact, these places preserve the name and fame of our ancestors who wanted to beautify the world, at least in the spheres where they could. So how beautifully it has been mentioned in the present line that these beautiful structures or buildings reflect that the efforts of the great rulers of the past who left no stone unturned to beautify their domains. कि पुराने ज़माने में जो रूलर्स थे उन्होंने अपने जो रियासतें सल्तनतें थीं, अपनी जो सल्तनत थी वो क्या चाहते थे, वो रूलर्स, वो हुक्मरान ये चाहते थे कि उसको ब्यूटीफाई किया जाए, अपनी सिविलाइजेशन को, अपने आर्किटेक्चर को ज़िंदा रखा जाए. एंड दे डिड all this through the promotion of art and architecture. These buildings fascinate us to such an extent that we get absorbed in the halo. Halo means word, realm, R-E-A-L-M, realm of myth and mystery. Myth hoga, imaginary, word, fantasy. So when we visit any of these beautiful buildings of the past, we definitely feel ourselves lost or get enchanted by the fascination, by the beauty, and by the beauty of these structures or buildings. जी बेटा, आप नेक्स्ट देखते हैं. वी हैड जस्ट फिनिश्ड आवर, नाउ यू विल आफ्टर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जनरल, नाउ यू हैव टू डिस्कस अबाउट योर ओन एक्सकर्शन, योर ओन ट्रिप, योर ओन विजिट टू एनी ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस विच यू like. So here we see we had just finished our April house examination at the end of first class and were feeling tired and exhausted with laborious work, hard effort. So definitely at the end of term exams, final exams, or at the end of house test, students really feel themselves quite exhausted and tense or quite tired. So the best way for them is to go on some recreational spots just for the sake of getting enjoyment and just for the sake of getting amusement. We were eagerly anxious to have some sort of recreation, a picnic or an outing to some historical building. So after getting bored or exhausted at the end of examinations, the students decided to move to some historical place, not only for getting some information and knowledge about that particular place, but also to know, but also to enjoy that place. One of our companions proposed that we should go to the Shalimar Gardens. All 4 roommates and the hostel welcomed the idea, and in a few moments we were at the bus stand. So a program was chalked out by the friends and it was decided to go to Shalimar Gardens. And when this proposal was presented by one of the member of the group, the rest of the
friends agreed upon, and they decided to move to Shalimar Garden, and for that purpose the group moved to bus stop. ठीक है, they moved to bus stand or bus stop to get a bus to move to their destination. तो जनाब ये अब दोस्त जो हैं वो इम्तिहान के बाद फरागत थी उनके पास और थकावट भी थी, इम्तिहानात के बाद एक बर्डन जो है वो सर से उतरा था। तो अब ये चाहते थे स्टूडेंट कि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस की तरफ जाएं जो कि ना सिर्फ मालूमाती भी हो, जहाँ रिक्रिएशनल पॉइंट भी हो, तफरी का मौका भी हो। तो लिहाजा डिसाइड किया गया कि शालीमार गार्डन की जानिब चलें और बस स्टैंड पर ये सब दोस्त रवाना होते हैं। The bus passed through the busy quarters areas of Lahore, and then it drove along the GT road towards Baghbanpura, a suburb outside of the provincial metropolis. Metropolis क्या होता है? The chief city of the province, the capital of a province. एक province एक सूबे का जो capital होता है, तो the bus gradually moved towards its destination. It crossed the quarters or the different areas of Lahore. It was moving on GT road, and we are moving towards Baghbanpura. Baghbanpura is basically an outside area of the metropolis or the provincial metropolis of Lahore. As the name of Baghbanpura indicates, it was the place of residence of the royal gardens who worked in the Shalimar Garden. So we say that what is the origin of this Baghbanpura, why this name is given to this area. Actually, the gardeners which were appointed to look after or which were appointed for the maintenance of this garden, they resided over in this area. So that is why this area was given the name of Baghbanpura, the residence of the gardeners. We had hardly crossed the thickly populated areas of the suburbs when the grand walls of the Mughal building were in sight. So after crossing the suburbs or outside areas or while reaching near Baghbanpura, eventually the walls of this magnificent structure were after all visible, came to be seen. तो ये किला, ये जो है बाग नज़र आना शुरू हो, इसकी जो ग्रैंड वॉल है वो नज़र आना शुरू हो गई. There stood the Shalimar Gardens with its walls like that of an ancient Mughal fort with a grand and majestic door on the road. So it is again interesting that when the wall of the gardens came into view, it was also visible that there was a grand and majestic door or entrance on the road of this garden on the road. Mughal emperor were men of refined fine taste, and great many buildings in Lahore, Delhi, Agra and Fatehpur Sikri stand a testimony proof to their love for art and architecture. So we see, when we talk about the Mughal emperors, we see that almost all of them, they were the man of refined taste. They loved art, they loved calligraphy, they loved architecture, they promoted art and literature during their ruling period. And we see many such monuments or historical buildings, not only in Lahore, but also talking about subcontinent in general, we see such many beautiful historical buildings in Lahore, Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, and which are the proof, these buildings are the proof that the rulers of the past, the Mughal rulers, they were the true lover of art and literature. The Shalimar Gardens are one of these specimen examples of superb art. It was built by Shah Jahan, the great architect of all the Mughal kings. It was completed in 1642 under the supervision of Ali Mardan Khan. So who built it? Actually, it was built by Shah Jahan, the Mughal emperor, and he was one of the great architect of all the Mughal emperors. And we see that the work on the gardens got completed in the year 42. And who was supervising all the work? Actually, it was supervised by Ali Mardan Khan. Yani he was a royal architect. He was appointed to supervise this project of the construction of Shalimar Gardens, which got completed in the year 1642.
जी, the next paragraph is, as we entered the gate, we saw the beautiful porch with a structure of marble. Right in front, we could see two rows of fountains with the tall green cypress trees standing on either side of them. तो जब हम जनाब गेट से एंटर हुए हैं तो there was a porch, a structure of marble, a beautiful porch was there. ठीक है, when we entered the gate, वहाँ पर एक porch था. तो right in front, what could we see? We could see the rows of fountains which are adding to the beauty of that garden. ठीक है, there were also tall cypress trees on both side of the rows के fountains थे और दो साइड पे जो rows थी वहाँ पर cypress सरू के दरख्त जो है, a type of tree cypress के सरू के दरख्त जो है वो खड़े थे, मौजूद थे. There is a perfect symmetry in the plan and layout. Layout means structure of the gardens. There are exactly similar type of structures on the right and left to the north and south. तो क्या है कि all the gardens are really in a very symmetrical order, and the structure of the gardens is superb. It's perfect example of magnificence and splendors, and exactly the same type of rows of fountains and cypress trees are also seen. This type of structures are also seen to the right and left to all the sides of covering these gardens. Not a line or curve is out of order. क्या है कि कोई line भी out of order नज़र नहीं आती. It is absolutely in a very symmetrical order. It is absolutely in a symmetrical order. It is a beautiful sight to see as the fountain play. At the end, when the fountain plays, again it add to the attraction and beauty and the magnificence of this garden कि जब फवारे चलते हैं तो और खुशनुमा मंजर पेश करते हैं. At the end of these rows of fountain there is a beautiful marble structure with a latticed platform overlooking the second plot. Lattice क्या होता है? A structure of crossed strips of wood or metal. क्रॉस्ड स्ट्रिप्स के साथ कोई स्ट्रक्चर बना हो, क्रॉस्ड स्ट्रिप्स उस पर लगी हो. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बेसिकली देयर आर 3 टेरेसेस, द 3 प्लेटफॉर्म्स और टेरेसेस ऑफ द गार्डन. ठीक है, तो ओवरलुकिंग वन इन अदर कि एक के बाद दूसरा प्लेटफॉर्म है. 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, टेरेसेस हैं. 1 प्लेटफॉर्म, 2nd प्लेटफॉर्म एंड 3rd प्लेटफॉर्म्स अलॉन्ग विद द गार्डन्स एंड बारादरीज. तो हर जो स्टेप है, हर जो प्लेटफॉर्म है, जो टेरेस है, वहाँ पर बारादरियाँ मौजूद हैं, फव्वारे मौजूद हैं और उनके साथ खुशनुमा बागात और फूल मौजूद हैं. तो देखते हैं कि there is a marble structure with a lattice platform overlooking the second plot. The water flows down over a marble throne near the water channel. तो हम यहाँ ये भी देखते हैं कि there is also marble throne which again adds to its beauty near the water channel. कि जो water channels हैं, पानी की बहते हुए जो छोटे-छोटे से ponds बनाए गए हैं, छोटे से पाथ्स, रास्ते बनाए गए हैं, तो उसके पास एक मार्बल थ्रोन, एक संगमरमर का तख्त भी रखा हुआ है, मौजूद है. देयर आर स्टेयरकेसेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स लीडिंग टू द मार्बल थ्रोन. तो इफ़ वी हैव टू रीच टू द मार्बल थ्रोन, तो व्हाट इज़ द सोर्स? देयर आर स्टेयरकेसेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गार्डन्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो हमें ये बताया गया है कि जो प्लेटफॉर्म है, जो टेरेसेस हैं, जो टेरेसेस स्टेप्स बने हुए हैं 3, उनके दोनों साइड पे क्या है? स्टेयरकेसेस हैं, सीढ़ियाँ हैं और उनसे उतर के उस तख्त तक पहुँचा जा सकता है, बारादरियों तक पहुँचा जा सकता है. We came down by one of these staircases and stood in a beautiful grassy plot. So what did the three friends what did the group of these friends did after reaching there, or after being on the first terrace? That after crossing they came down after watching the beauty of that first terrace. They came down through these staircases to the second plot to enjoy the grassy fields, the grassy or flowery gardens over there. Next देखते हैं बेटे. The second plot has a big tank of water on both sides of which stand baradaris or marble structure with 12 doors in each. तो baradaris क्या है? Basically these are also the structures with 12 doors in each. तो second plot में क्या नज़र आता है हमें? हमें नज़र आती है baradaris और
द बारादरीज मीन द मार्बल स्ट्रक्चर्स विथ 12 डोर्स इन ईच। तो बारादरियाँ खुशनुमा बनी हुई हैं जस्ट फॉर द with the purpose to have leisure walk or to have a sound stroll over there. In the spring season when we visited the place, it had abundance of flowers of various colors. तो जब हम spring season में पहुँचे उस बाग में तो क्या है, we were attracted by the by watching or by seeing by watching the beautiful flowers grown over there. खूबसूरत खुशनुमा फूल जो है वहाँ पर उगे थे और वो देख के हम खुश हुए. We passed through one of the baradaries and descended came down, नीचे उतरना, into the third plot. ठीक है, it had tall, grand cypress trees along the walks and a large number of mango trees in the grassy plots on either side. So after enjoying the beauty of this second plot or terrace of the Mughal gardens, we finally decided to descend just to enjoy the beauty of the third plot, grassy plot as well. And we were really shocked to see, we are amazed to see the beautiful mango trees and grassy plots on the third terrace. तो third terrace पे भी जो grassy plots थे, mango trees थे, उनसे हमने उन्हें देखकर enjoy किया, हमें वो पसंद आए. It was a sunny haunt mean place, jagah of cool shades and comfortable seats. So what did we find there on the third terrace or platform? There it was quite cool and sunny or shady place because of too many trees grown over there, and there were also comfortable seats for the visitors to sit over there to capture the beautiful moments in their cameras and to enjoy a sort of and to chat and enjoy or to have some gossips in the company of one another. Coleridge could not have imagined a better place in this poem Kubla Khan than the palatial gardens of the Mughal kings. Palatial is the royal garden. You know that S.T. Coleridge is one of the best poets and he wrote a very famous poem, that is Kubla Khan, and in this poem he praised the beauty, the splendor and the magnificence of the beautiful palace of Kubla Khan. So if he had visited Mughal garden, Shalimar gardens, so he might have forgotten all other things. कहते हैं कॉलरिज जो है, एस.टी. कॉलरिज, उसने कुबला खान के नाम से एक नज़म लिखी थी और उसमें जो उसके महल की शान व शौकत थी, असमत थी, उसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया है. तो अगर कभी कॉलरिज जो है वो शाही बागात का, ये मुगल गार्डन का विज़िट कर ले तो वो बाकी चीज़ों को भूल जाएगा. जी बेटे, these gardens must have been glorious place in olden days, but when I saw it for the first time, it lay in a state of neglect, dilapidation. तो क्या है कि the garden must have been well maintained in the time of time period of the glorious rulers, the grand rulers who appointed the royal architects for the construction of this royal structure. तो किसी ज़माने में ये बड़ी शाहाना बागात हुआ करते थे, but when we visited this garden it was in a state of neglect. तो जब हमने इस garden का visit किया तो ये काफ़ी बुरी हालत में था. It needed some renovation. A few years later, the goddess of good fortune smiled over it and it was renovated, repaired by the government as the royal visitors from our neighboring Muslim countries were coming to see it. तो क्या हुआ, वो कह रहे कि when we visited, actually when these friends visited the garden, it was in a state of neglect. But eventually after a few months, this gardens or the structure was renovated because some of the rulers from the neighboring countries, neighboring Muslim countries were coming to visit this garden. So that is why it was renovated. तो कह रहे कि जब हमने यहाँ सैर की तो ये बहुत ही बुरी हालत में था, इसका कोई मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं था. लेकिन कुछ ही सालों के बाद पता चला कि जो नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ से रूलर्स जो हैं, जो विजिटर्स हैं, वो यहाँ पर रॉयल विजिटर्स आना चाहते हैं. तो उस हवाले से इस बाग की किस्मत खुल गई कि इसकी रेनोवेशन जो है वो स्टार्ट हुई और इसको दोबारा से अपनी फॉर्मर स्टेट में लाया गया.
इट हैज़ नाउ बीन रिस्टोर्ड टू इट्स फॉर्मर ब्यूटी एंड ग्रैंडियर अगेन। तो क्या है, वंस अगेन द ब्यूटी एंड द ग्रैंडियर ऑफ दिस गार्डन वॉज रिस्टोर्ड because of the renovation, quick renovation by the government. The government took step after that to maintain its beauty टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अब क्या है, इसकी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है मेंटेनेंस करती रहती है। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ द टाइम व्हेन द मुगल किंग्स, क्वींस एंड प्रिंसेस वॉक along the paths and enjoy the cool haunts of this garden in summer days. So while one visits this beautiful garden, one definitely imagines that what time period it was when the different kings, queens, princes and princess used to come to this garden during summer just for the sake of हैविंग सम रिक्रिएशन। तो जब मैं इस बाग में चहलकदमी कर रहा था तो सोच रहा था कि वो ज़माना कैसा होगा कि जब बादशाहों ने इसको तामीर करवाया था और बादशाह, उसकी मलिका, शहज़ादे, शहज़ादियाँ मौसम गर्मा गुजारने इन गार्डन्स का रुख किया करते थे। वेयर हैज़ फ्लेड द ग्लोरी ऑफ मुगल्स। तो क्या है, अ क्वेश्चन डेफिनेटली अराइजेज इन माइंड, वेयर हैज़ द स्प्लेंडर एंड ग्रैंडियर ऑफ द मुगल पीरियड गोन, कि वो मुग़ल दौर जो था शान और शौकत वाला, वो कहाँ चला गया। Alas, this word is evanescent, vanishing, temporary, and the pomp and glory enjoyed by the great vanishes like a dream. So ultimately we come to realize that all the things in this world are about to vanish. ठीक है, we are having our temporary stay in this world. Eventually we have to die, we have to leave this world. Yet the glory and the grandeur of these great rulers is survived. It still existed and survived in the form of these beautiful structures and ancient monuments which they ordered to be constructed during their ruling era. फाइन। तो बेटा क्या है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि हमारे रूलर्स जो हैं वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के कितने दिलदादा थे। तो वो क्या है, अपने जाने के बाद दुनिया में ये यादगार जो हैं छोड़ गए हैं, और जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो ओल्ड सिविलाइजेशन को, कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं और बहुत कुछ हम तक पहुंचाती हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन कन्वे करती हैं। कौन? ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है बेटा, हियर comes to an end. Here today's lesson comes to an end. आप देखते हैं today's essay not lecture। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटे। we will practice some more solved translation exercises। आपकी जो solved exercises हैं, unsolved exercises जो हैं यूनिक नोट्स में, वो तकरीबन हमने लास्ट लेक्चर में 3 की थी। अब 4th वाली एक्सरसाइज जो है अनसॉल्व्ड, उसको आज करते हैं जी बेटा, और देखते हैं कि आपके पास क्या आता है। और बेटा आपको मैं ये बता चुकी कि आपके नए जो नोट्स के जो नया एडिशन है, नए एडिशन के अंदर जिस ऑर्डर सीक्वेंस में ये 12 पैराग्राफ्स हैं अनसॉल्व्ड, उसी ऑर्डर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसी ऑर्डर में 3 एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करवा दी हैं। अब नंबर 4 पे आ जाइएगा। नंबर 4 पे है, कुरान और सुन्नत ने टैक्सों का निज़ाम मुकर्रर नहीं किया है। मुकर्रर करना क्या होगा? गिवन, डिफाइंड। तो कुरान एंड सुन्ना किया, नहीं किया, तो नहीं किया है, यानी कुरान और सुन्ना हैज़ नॉट डिफाइंड, हैज़ नॉट गिवन टैक्सों का निज़ाम, द सिस्टम ऑफ टैक्सेस। कुरान एंड सुन्ना हैज़ नॉट डिफाइंड और गिवन द सिस्टम ऑफ टैक्सेस। ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। नेक्स्ट लाइन को देख लेते हैं क्या है जी। नेक्स्ट लाइन पे ये है, ज़कात एक मज़हबी टैक्स है। ज़कात इज़ अ रिलीजियस टैक्स जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, विच इज़ कंपल्सरी ऑन एवरी मुस्लिम। इसके अलावा की इंग्लिश क्या होता है? बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा। बिसाइड्स हुकूमत मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री शहरियों पर टैक्स लगा सकती है। कैन, तो टैक्स लगाना क्या होता है? टू लेवी टैक्स, टू इम्पोज
tax, to levy tax. Besides, government can impose tax on the citizens according to its needs, according to the needs of the country. Besides, government can impose tax on the citizens according to the needs of the country. आगे देखें, इस्लाम इस सिलसिले में ये शर्त लगाता है, इस्लाम allows it on the condition, allows it on the condition, allow ALLOWS, इस्लाम allows it on the condition कि टैक्स मुल्क की ज़रूरियात के लिए लगाए जाएं, that taxes should be imposed or levied for the needs of the country. ठीक है, तो इस्लाम allows it on the condition that tax should be imposed for the needs of the country, और उन्हें अवाम की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च किया जाए. शुड के साथ शुड बी था तो थर्ड फॉर्म सारी आ जाएंगी, यानी द टैक्स शुड बी इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री एंड स्पेंट ऑन द, और उन्हें अवाम की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च किया जाए, एंड स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल. एंड स्पेंट, ये शुड बी के साथ लाइन आपने शुरू की हुई है और बी की वजह से हमने स्पेंट कहा है. ठीक है, ठीक है. इम्पोज को भी हमने थर्ड फॉर्म में लिया था, बी की वजह से, शुड बी की वजह से इम्पोज्ड हो गया था, और स्पेंड भी स्पेंट हो जाएगा. एंड स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल. कोई हाकिम अपनी जेब भरने के लिए टैक्स वसूल नहीं कर सकता. टैक्स वसूल करना क्या होगा? टू गेट टैक्स, टू रिसीव टैक्स. तो नो रूलर कैन रिसीव टैक्स, कैन गेट टैक्स टू फिल हिज पॉकेट, अपनी जेब भरने के लिए, टू फिल हिज पॉकेट. अगर कोई ऐसा करेगा तो वो खुदा और अवाम के आगे जवाबदेह होगा. तो क्या है, एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में. तो इफ़ समबडी डज शो, अगर कोई ऐसा करेगा, इफ़ समवन डज शो, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ही विल बी हेल्ड आंसरेबल बिफोर Allah, before God and the people. ठीक है, if someone does so, he will be held responsible before God and Allah. जी बेटे, आपका क्वेश्चन, ये पैराग्राफ नंबर 4 कंप्लीट हुआ. तो नेक्स्ट पैराग्राफ 5, दैट इज़ टू बी प्रैक्टिस्ड. अब देखते हैं कि इसमें क्या है. कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन, कि मुसलमान बेशुमार फ़िरक़ों में बटे हुए हैं मीन आर, और बटे होना क्या होता है? तकसीम होना, डिवाइडेड. सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट द मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्ट्स. सेक्ट्स क्या होता है? SECTS, फ़िरके को कहा जाएगा सेक्ट. दैट मुस्लिम्स आर, सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट द मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्ट्स. इन हालात में पाकिस्तान में इस्लामी रियासत कैसे कायम हो सकती है? तो इन सच अ सिचुएशन, हाउ कैन, या आप कह सकते हैं, हाउ कैन एन इस्लामिक स्टेट बी इस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान इन सच सर्कमस्टेंसेस? हाउ कैन एन इस्लामिक स्टेट बी इस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान इन सच सर्कमस्टेंसेस? हकीकत ये है कि ये लोग इस सिलसिले में मुबालगा से काम लेते हैं. क्या हुआ ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और मुबालगा क्या होता है? एग्जैजरेट. EXAGGERATE. हकीकत ये है कि ये लोग इस सिलसिले में मुबालगा से काम लेते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे एग्जैजरेट in this regard, इस सिलसिले में in this regard, as a matter of fact they exaggerate in this regard, present indefinite tense. मुसलमानों के बाकायदा फ़िरक़ों की तादाद सिर्फ 6 या 7 है. The number of the regular or confirmed sects of Muslim is 5, is 6 or 7. तो the confirmed number
of the, or the number of the confirmed sects, the number of the confirmed sects of the Muslims is 6 to 7. बड़े फ़िरके सिर्फ 2 ही हैं. There are only 2 major sects, major, major. There are only 2 major sects. अक्सर फ़िरके सिर्फ तारीख़ की किताबों में ही मिलते हैं. तो मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स आर फाउंड ओनली इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री. मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स आर फाउंड, मिलते हैं, प्रेजेंट टेंस. मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स आर फाउंड ओनली इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री. या उन लोगों के जहन में जो किसी गैर मुल्की और गैर मजहबी नजर हयात पर यकीन रखते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनेट. गैर मुल्की क्या होगा? फॉरेन, FOREIGN. और गैर मजहबी सेक्युलर, सेक्युलर होगा गैर मजहबी, SECULAR. और दीज एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द पीपल हु बिलीव इन एनी फॉरेन और सेक्युलर आइडियोलॉजी, नजरिया हयात, आइडियोलॉजी. और इट एग्जिस्ट्स, it is found in the minds of the people who believe in any foreign or secular ideology, नज़र हयात. फिर मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात इतने शदीद हरगिज़ नहीं कि वो इस्लामी रियासत के बुनियादी असूलों पर मुत्तफ़िक ना हो सकें. Then we see that the mutual differences among Muslims are not so intense. Mutual differences, बाहमी इख्तलाफात. Then we see that the mutual differences among the Muslims are not that acute, are not that intense कि वो इस्लामी रियासत के बुनियादी असूलों पर मुत्तफ़िक ना हो सकें. That they could not be agreed upon the basic principles of an Islamic state. That they could not be agreed upon the basic principles of the Islamic state. Full stop. कई साल हुए मुसलमानों के सभी फ़िरक़ों के उलमा ने इत्तफ़ाक़े राय से इस्लामी निज़ाम में हुकूमत के बुनियादी असूल तय किए थे. ठीक है, इत्तफ़ाक़े राय से क्या होगा? यूनैनिमसली, यूनैनिमसली, UNANIMOUSLY. तो हम देखते हैं द स्कॉलर्स ऑफ ऑल द सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स यूनैनिमसली decided the basic principles of an Islamic state many years ago. The scholars of all the sects of Muslims unanimously decided the basic principles of Islamic state many years ago. ठीक है बेटा, तो here comes the end of today's lecture. Inshallah, we will do some more things in the new lecture. So take care and stay blessed. Allah Hafiz bete.